हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज वेरिएबल्स। ओके, सो हमने ऑलरेडी कुछ बुलेट पॉइंट्स बनाए थे। उस बुलेट पॉइंट्स में वी हैव ऑलरेडी मेंशन दैट वेरिएबल इज ए नेम दैट स्टोर द डेटा। विच टाइप ऑफ डेटा? जिस टाइप का हम डेटा टाइप यूज करते हैं। ओके, तो अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। डिफिनीशन हमें भी खुद नहीं समझ में आता है और समझाने में भी दिक्कत होता है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में वेरिएबल डिस्कस किया है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक नेम है जो कि वैल्यू स्टोर करता है, और उस वैल्यू को हमें गेट करने के लिए उस वेरिएबल नेम से हम गेट करते हैं। अगर हम वैल्यू स्टोर कर दें मेमोरी में, लेकिन उस मेमोरी का नेम नहीं होगा, तो उस वैल्यू को कैसे एक्सेस करेंगे? तो सी क्या करता है, सी कंपाइलर, जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और डेटा टाइप की भी मेमोरी होती है कि इंटीजर 2 बाइट लेगा, कैरेक्टर 1 बाइट लेगा, फ्लोट 2 बाइट लेगा, डबल 4 बाइट लेगा, ऐसे करके इनकी लिमिट होती है, ठीक है। तो ये जैसे हम जिस टाइप का वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, डबल टाइप, कैरेक्टर टाइप या स्ट्रिंग कह लो, स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग बेसिकली होता नहीं है, ये एरे ऑफ कैरेक्टर होता है। ओके, तो वो क्या करेगा, बेस्ड ऑन द डेटा टाइप मेमोरी एलोकेट करेगा, और उस मेमोरी में जो भी वैल्यू आपने असाइन किया है दैट वैल्यू विल बी स्टोर। ओके, तो अभी हमने इस प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली देयर आर प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव का हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी हमने कितने कीवर्ड यूज किया था यस्टरडे वीडियो में कि इंटीजर एक कीवर्ड होता है, एक कीवर्ड फ्लोट होता है, थर्ड वन इज कैरेक्टर, एंड फोर्थ वन डबल, एंड फिफ्थ वन कैरेक्टर ऑफ एरे होता है, ठीक है, जो कि हमें यूज करते हैं स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो अभी इसको छोड़ते हैं। अभी हम 4 डेटा टाइप, ये क्या है, ये डेटा टाइप्स है। इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर क्या है, डेटा टाइप्स है, डेटा टाइप्स। अब ये डेटा टाइप्स हम क्यों यूज करते हैं? डेटा टाइप्स बेसिकली हम यूज करते हैं टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। डेटा टाइप वी यूज, अरे यार, वी यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। ओके, अब वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करेंगे? हम उसका कल सिंटैक्स डिक्लेयर किए थे, सिंटैक्स हमने देखा था कल कि वी नीड टू यूज डेटा टाइप, ठीक है, एंड वेरिएबल नेम। ओके, एंड आप अगर at the declaration time you want to define, so is equal to values। ओके, तो क्या क्या होगा, डेटा टाइप होगा एंड वेरिएबल नेम होगा, ठीक है। अगर आप डिक्लेरेशन टाइम पे आप अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो इक्वल टू वैल्यू, जो भी वैल्यू यूज करते हैं। अब डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, डबल है, एंड वेरिएबल नेम हम किस बेस पे रखते हैं कि जैसे हमें समझ में, जैसे हम नंबर को डिक्लेयर कर रहे हैं तो नंबर हम रखेंगे ऐसा नेम, जैसे हम नेम को स्टोर करना चाहते हैं तो हम ऐसे कुछ जैसे नेम रख लिया तो पता नहीं चलेगा ना कि इसमें क्या स्टोर्ड है। तो कोड भी रीडेबल होना चाहिए, इस वजह से हम जो वैल्यू स्टोर करते हैं उसी से रिलेटेड नेम रखते हैं। तो हम नेम, जैसे हम हमारे रामलाल जी हैं तो रामलाल जी नेम है, तो हम उसका वेरिएबल नेम क्या रखते हैं, नेम, और उसमें हम कोई भी नेम असाइन कर सकते हैं, जैसे राम, श्याम, कृष्ण, वट एवर यू हैव दैट यू कैन असाइन। ओके, सो डेटा टाइप हमें क्या, अगर हम वेरिएबल अगर डिक्लेयर करना है तो हमें डेटा टाइप की जरूरत पड़ती है। विदाउट डेटा टाइप वी कैन नॉट डिक्लेयर एनी वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग।
ओके। तो अच्छा, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल बेसिकली यूज करते हैं वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अब हमने इस वेरिएबल में हमने जैसे हमने बनाया इंटीजर नंबर, ये क्या हो गया? एक हमारा वेरिएबल हो गया। किस टाइप का वेरिएबल है? इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा? इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। जैसे हमने फ्लोट, FLOAT फ्लोट, हमने कोई नंबर ले लिया जिसमें 2 3, फ्लोट मीन्स पॉइंट वाली वैल्यू हम स्टोर करते हैं, नंबर, ठीक है, नंबर, फ्लोट नंबर लिख देते हैं, फ्लोट NUMBR नंबर, ठीक है। तो ये क्या डिफाइन कर रहा है? ये फ्लोट नंबर स्टोर कर रहा है। आप अगर इस फ्लोट को इंटीजर में डालेंगे तो स्टोर करेगा, लेकिन इसको ये इग्नोर मार देगा, ठीक है। आप इंटीजर नंबर को ऐसे आपने डाला फ्लोट में, तो आप जब आप गेट करेंगे आउटपुट, तो ये क्या करेगा? .00 ऐड कर देगा, ठीक है। आपने ऐसे फ्लोट डिफाइन कर लिया। अब ये क्या हो गया? ये आपका यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। VARIABLE वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये हो गया। समझिए डिक्लेरेशन और डिफिनीशन। यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर भी कर रहे हैं और एंड डिफाइन भी कर रहे हैं। डिफाइन मीन्स वी आर प्रोवाइडिंग द वैल्यूज, ओके। डिक्लेरेशन मीन्स ओनली वी आर giving a name but we are not assigning the values, okay. So there is a default value that is assigned, we will discuss later. So here float में हम क्या कर रहे हैं? here हमने डिक्लेयर भी किया और डिफिनीशन भी दे दिया। डिफिनीशन क्या दे दिया? उसकी वैल्यू हमने दे दिया। बट हियर हम ओनली डिक्लेयर कर रहे हैं और वैल्यू बाद में हम देंगे या रन टाइम पे देंगे, ठीक है। तो ये फ्लोट हमने डिक्लेयर और डिफाइन कर लिया, यहाँ पे इंटीजर डिक्लेयर कर लिया। हम वैसे CH या कैरेक्टर टाइप के हम मान के चलिए, कैरेक्टर कोई ले लेते हैं, कैरेक्टर स्टोर, STOR, ठीक है। इसमें हम कैरेक्टर स्टोर करते हैं C, ठीक है। और वैसे हम क्या हो गया? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड डबल, DOUBLE डबल, डबल DOUBLE डबल वेरिएबल। हम इसलिए लिख रहे हैं, इसका नेम कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे लिख रहे हैं कि ये समझ में है। डबल वेरिएबल में आप 15 to 16 कैरेक्टर का जो भी आप होगा डेटा इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये हो गया इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल। बेसिकली यही यूज करते हैं हम 4 डेटा टाइप इन C। बट आप अगर आपने ये सोच रहे हैं स्ट्रिंग कैसे स्टोर करेंगे, तो स्ट्रिंग के लिए आप कैरेक्टर और STR स्ट्रिंग, और इसके अंदर आप जो भी स्ट्रिंग देना चाहते हैं, राम लाल जी, ओके। तो ये क्या करेगा? ये स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। अब लेकिन ये इंटरनली क्या करेगा? ये एरे बना के एक एक कैरेक्टर ये डाल देगा, और दैट इज अ पार्ट टू डिस्कशन लेटर, ओके। ये बाद वाली पॉइंट है, अभी नहीं, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना, बिगिनर है, क्योंकि हम एक ही चीज़ कई बार डिस्कस कर देते हैं। मतलब हम डेटा टाइप के यूज आप समझ आएंगे ना, you will get better, okay, that what is the data type basically we use to declare the variables, okay. And without data type you cannot declare variables in C, okay. So if we are declaring the variables, we want to declare the variables, then we need to use data type, okay. And that is the basically there are 4 keywords we need to use to declare the data type in C, right? So integer, float, character, double, or character array. This is the to define the string, okay. And data, अगर वेरिएबल हम वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल स्टोर करता है
वैल्यूज को, डेटा को। अब वेरिएबल हम क्यों वेरिएबल नेम डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमें मेमोरी में उस मेमोरी का नेम देना होता है, तो उस मेमोरी जैसे हम डेटा को एक्सेस कर सकें, जो भी डेटा हम, तो जो भी ये जैसे हमने ये वैल्यू दिया है 234.89 समथिंग, तो ये हमने डबल वेरिएबल दिया है। ये क्या करेगा, सी एक मेमोरी असाइन करेगा डबल टाइप का, मीन्स 4 बाइट या 8 बाइट जो भी होता है, हमें तो भूल रहे हैं अभी के लिए ना, हम ये मेमोरी एलोकेशन बात करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये एक मेमोरी एलोकेट करेगा, ठीक है। उस मेमोरी में क्या करेगा, ये डेटा डाल देगा, ठीक है। अब डेटा डाल दिया मेमोरी में आपने, अब आपके पास न नेम है न रेफरेंस आईडी। रेफरेंस आईडी तो ऐसे रन टाइम पे जनरेट होती है, जो मेमोरी एलोकेट होगी, जो जिस बाइट की, उसका एक रेफरेंस आईडी होगी, एक वो आईडी तो रन टाइम पे जनरेट होती है। वो आईडी हम तो गेट कर नहीं सकते हैं, तो हम ये वैल्यू कैसे गेट करेंगे, इसलिए हम कोई नेम देते हैं, उस नेम में वैल्यू असाइन करते हैं। तो सी कंपाइलर क्या करता है, ये मेमोरी एलोकेट करेगा और ये वैल्यू डाल देगा, और उस मेमोरी का नेम जो हम नेम दिए रहेंगे वो नेम दे देगा, जिससे हम ये नेम से ये वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वेरिएबल और डेटा टाइप, अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन है तो फिर एक बार कमेंट करिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस अब ये समझ सकते हैं ना कि क्यों हम वेरिएबल नेम यूज करते हैं, व्हाट डू वी नीड टू यूज वेरिएबल नेम एंड व्हाई, and if we need to declare the variable or define the variable, so we need to use data type. Without data type we cannot declare the variables, okay. And why we need to data type, means that data type indicates that which type of data the variables will contain, means this indicating integer type का data contain करेगा, this float is indicating it can contain float type of data. Character means it is indicating that it can store character type data. Double means it can store double type data, okay. And this is indicating that it will store string type of data, okay. So I think you should not confuse, you should not be you should not have any doubt, right? So let's execute this using the code, okay. So you already have discussed that if you want to write the code, there are two things is mandatory. First, has include studio.h, means header, okay. If you are and you want to take a runtime input output, so you need to use you include conio.h, means console input output, standard input, both a header we need to use, okay. And third, main function will be mandatory. Without main function we cannot write the code, okay. Where do you could, because compiler compile करेगा तो पहले main खोजता है, where is the main, okay. कंपाइलर में ऑलरेडी डिफाइंड है कि बिना मेन का हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मेन खोजेगा, मेन नहीं मिलेगा तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं हैज include इंक्लूड स्टूडियो स्टूडियो डॉट एच, ओके। तो अभी हम रन टाइम पे कुछ इनपुट आउटपुट परफॉर्म नहीं करने वाले हैं, वी डू नॉट नीड conio.h, so only I am adding studio.h, okay. Only this header I am adding, and then second point, main should be there, okay. So here we are not using, we don't want to return anything, so we can use void main and then curly braces, okay. So that this is the mandatory things if you are writing any code, and then you can save .c, okay. So that is, we are using online tool, so there is no problem, okay. Here, so here there are 4 keywords we have used to declare the variables. There are 4 data types we used to declare variables. So let's all the data types using here, and we can print, okay. And what syntax needed to print all character, integer and double and string type of data type variables, okay. So let's discuss integer, and we don't want to declare a different, we don't want to define after declaring a variables, okay. I can, okay, no problem. Sometimes I will use declaration and definition, and sometimes we will use, so we cannot confused, okay. So here integer number is equal to 10,
what we are doing here, we are declaring and defining. What is this? Is the data type, this is the variable name, this is the value. Okay, so that num num contain integer type of data, that is indicating. Okay, here float 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 number. Okay, and here we are only declaring but not defining. Here we have declared declared the variable and defined. Defined means we have already added the values at that declaration time. So बहुत लोग confuse हो जाते हैं declaration and definition. So if you are a beginner, so you can understand what is the declaration, what is the definition. Here we are declaring and defining, we are doing at the same time. Okay, and here we are only declaring the variable. Okay, declaring the variables. Okay, and then after we are defining. Okay, float number means 78.89. Okay, so here we are defining. Okay, defining the variables. Okay, so you can understand now, here we are performing both declaration and definition. Here we are declaring, here we are defining. Okay, so you cannot be confused. Okay, right? So character variable. Okay, and here we are adding a capital A. Okay, then fourth one is double, double variable is equal to 5678.0987. It would be a 15 digit. We'll discuss later what is the difference between float and double and integer. Okay, no problem. Let's understand the data type and variable. Okay, so that you cannot be confused. Okay, so last rich array character and string variable is equal to Ram Lal ji. Okay, and इसको हम रन करते हैं, means saying something miss dble double. Okay, why we are getting the error? This because we have used a capital letter, because C programming case sensitive, so that C is not understanding what is double. Capital you have used D, so what is double? So we need to use a small letter keyword. Okay, and okay, third one character string. Okay, means this is indicating something. Okay, that is a synthetical error. Okay, okay, also we are getting. Okay, so no problem, you can add correctly here. What is saying, bro? Okay, saying that this is the single port. Okay, now, so how can you understand that? Okay, that is there is no output. Okay, so we need to print printf what is integer variable num. इस num का क्या है वैल्यूज पर इंटीजर को हम प्रिंट कराने के लिए क्या यूज करते हैं, %d. okay, so this is the standard things. Okay, we need to use and comma num anyone, that is the syntax. Okay, so you can understand printf integer. Okay, and
Again we have used single quote because okay, let's use double quote. That is a synthetical error. You can see that is a synthetical error, so you can find that is indicating okay you are using this. Okay, so here you can see integer variable number and number we are printing number variables. So what is the value? 10. Okay, so same like that here we are adding slash n because line should be changed. So slash n we use to change the line number. Okay, otherwise this will print in a single line. Okay, so here okay, so that is an integer and float. For float we use percentage f and that is the float number. Array, control c, here float number and that is the float number. Okay, we can use here float. Okay, and remove this integer and this one character char variable. Here char, as for char we use percentage c. Okay, and then double double. For double we use lf and 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 double हो गया and string means this one. So for string copy हो जाए भाई. For string we use s. Okay, so this is the syntax. Okay, we need to use to print the integer, float, character and double variables. Okay, so you need to remember or you need to take care about that. Okay, so we have declared here the integer type of variable here and defined. Here we have only declared the variables and here we are defining the float variables. Here all rest of all we have used to declared and definition both at the same time. Okay, and here we are using to print these values number one, float, number, character, and for integer we use percentage t, float we use percentage f, character for use vc, and double you use lf, percentage lf. Okay, to print, and the number we use percentage s. So let's run. So you can see integer variable number 10, float number 78, and character value capital A, and double value 78.89 something. Okay, okay, means double we have already replaced number. Okay, so here we use okay and string here. Okay, so you can see correct output here is number 10. You can see Ramlalji string. Okay, we use percentage f, percentage s, lf for double. Okay, so here 5678909. Okay, so you can see here now whatever the data type we have used and declare the variable and define the variable, and we have already print the all the values. Okay, so you can understand easily that what do we need to use to declare the variables and how to print the variables. Okay, in C programming. Okay, so there is no confusion. Okay, कि variable हम क्यों declare करते हैं, what is the use case of variable. Okay, and why we use data types and what is the use case of data types. हमने पहले भी कहा है कि डेटा टाइप हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अब जैसे इंटीजर नंबर है इसमें हम कैरेक्टर डाल देंगे तो ये
एरर थ्रो करेगा। अभी आपको देखें यहाँ पे एरर थ्रो करेगा, कहेगा भाई ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप, देखो ये कर रहा है डिक्लेरेशन द वेरिएबल डिफिनीशन, ये कह रहा है कि भाई डिक्लेयर द वेरिएबल एंड डिफाइन, मीन्स आप डिक्लेयर एंड डिफाइन तो कर रहे हैं लेकिन ये क्या है ये समझ नहीं आ रहा है, इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये है क्या। क्यों? क्योंकि हमने इंटीजर टाइप का डेटा वेरिएबल बनाया है और हम इसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो ये एरर थ्रो कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये समझने की ज़रूरत है कि जिस टाइप का डेटा टाइप होगा उसी टाइप का वैल्यूज हम उस वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। दैट इज द रिस्ट्रिक्शन इन सी प्रोग्राम। ओके, वी कैन नॉट स्टोर द string type of data, a character type of data into integer variable. Okay, we cannot store string values inside the float variable. Okay, so that is the restriction. तो ये आपको समझ में आ गया ना कि क्या है कि वेरिएबल क्यों डिक्लेयर करते हैं, व्हाट इज द यूज केस ऑफ वेरिएबल, हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स, ओके, how to define the variables and how to declare and define both variables, okay, how to declare and define both in the variables, okay, and how to print integer percentage percentage f to float, percentage c character, percentage lf for double, percentage s for string. ओके, सो आप अगर बिगिनर हैं तो आप ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, अगर आप थोड़ा एक्सपर्ट हैं तो कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, या फिर आपके पास कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, आपके पास कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट में ऐड कर सकते हैं, सो आई कैन इम्प्रूव। ओके, एंड इफ दैट वीडियो इज गोइंग टू हेल्पफुल फॉर यू, सो यू कैन like and comment and share, and you can write in the comment box some positive words, okay, that okay, we got this video and that video is very helpful for me. Okay, might be a chance that I cannot expect my explanation might be, हो सकता है कि आपको थोड़ा अच्छा न लगे, लेकिन आप ट्राई करेंगे समझने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे मतलब हम मतलब उतना डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि what is the basic what is the basically use case I already explained. Okay, so that's all. आप thank you so much.